Hello everyone, I welcome you all to Biology Lessons with Kalyani. Today we are going to do lecture 3 and we are going to discuss about endomembrane system. Now inside a cell there are different membranous organelles. If the organelles work together or their functions are coordinated, they are related to each other, then they constitute a system and we called it endomembrane system. माने सेल रो different membranous organelle माने जदि मिसिकिरी काम करथुबे तांगर functions गुडा related थिबे ताहाले से endomembrane system को constitute करिवे. It typically includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Mitochondria, chloroplast और peroxisomes रो function ता unrelated सेथिलागी से माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो पार्ट नुहंती. आमे डिटेल रे all four components को स्टडी करिबा. First in the list is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is typically made up of reticles. Reticles माने कौन? ना network of tiny tubular structure. इठी डायग्राम रे देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा होची तार नेटवर्क टा देखा होची. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal that is the cytoplasm compartments. कौन यार माने डिटेल ले देखिबा. या माने हला एटा हमें गोटे सेल कंसीडर करिबा. एटा हला हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स गुडा. तो ता भीतर जो स्पेस अछि ताकू हमें कहिबा लुमिनल स्पेस. आ जहां भी स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि ताकू हमें कहिदबा एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस. Now depending on the structure or the presence of ribosomes, we can divide or classify the endoplasmic reticulums into two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Under the microscope, RER appear rough and smooth endoplasmic reticulum appear smooth. Why? Because RER surface रे ribosomes attach थांती और से माने ताकू गोटे rough appearance दियन. जदि हमें फंक्शन भितरे कथा कहिबा ताहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर राइबोसोम्स अछि आ आमे सब जानिचो कि राइबोसोम्स फंक्शन हैला प्रोटीन सिंथेसिस. The RER is responsible for protein synthesis and secretion and they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. यार RER रो पोजीशन रे देखिबा RER टा न्यूक्लियर आउटर एनवेलप संगरे कंटीन्यूअस. जदि हमें ACR रो फंक्शन विषय रे कथा कहबा तले ACR टा हमरो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स पई रिस्पांसिबल अछि. In animal cells, lipid like steroid hormones are synthesized in ACR. S for ACR, S for steroids. एमती हमें ताको मने रखि परिबा. एबे हमें सेकंड component ऊपर पढिबा, that is Golgi apparatus. Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in the year 1898. और तांको ना ऊपर ही organelle टा name हेची. These are the densely stained reticular structures near the nucleus. Golgi apparatus भी nucleus पाखरे देखा जाए किंतु unlike RER it is not attached to the nuclear envelope. It is located close to it. Now Golgi apparatus consists of many flat disc shaped sacs or cisternae. डायग्राम रे देखो ए जो sac गुडा अछि एटा को आमे cisternae कहूचु. और यार approximate तार dimension diameter of the cisternae is about 0.5 to 1 micrometer. और arrangement ए cisternae गुडा करा parallel to each other थाए. आउ टिके डिटेल रे हमें स्ट्रक्चर टा देखिबा.
The Golgi cisternae are arranged concentrically near the nucleus. They have distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. इस structure टाकु जदि हमें consider करिबा, the first cisternae is close to ER. आमे जदि याको कंपेयर करिबा गोटे कन्वेक्स लेंस भिलिया देखा जाउची, सेति लागो आमे याको टर्न कर देबा कन्वेक्स फेस. आ जदि डिस्टल पार्ट को देखिबा, यार स्ट्रक्चर ता हमर कॉन्केव लेंस भिलिया देखा जाउची, सेति लागि आमे याको कॉन्केव भी कहि परिबा, कॉन्केव फेस भी कहि परिबा. नेक्स्ट कथा हैला, the materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis face of the Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum रे आमर कोन लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज हुए. ए प्रोटीन गुड़ा आमर ट्रांसपोर्टेड हुए गोटे वेसाइकल भितर. तो Golgi apparatus रे जो फर्स्ट सिस्टर ने अछि ता संगे सेटा आसीके फ्यूज हे जाए. सेति लागि ताकू आमे कहूचु सिस और द फॉर्मिंग फेज. आउ मैच्योर हैला परे सेटा तमर ट्रांस फेज रु सिक्रीट आउट हे जाए, सेति लागि ताकू आमे मैच्योरिंग फेज भी कहू. एबे देखिबा इनसाइड द सिस्टम ने कोन हुए. आगे गोटे प्रोटीन जतले फर्स्ट एंटर करिबो Golgi apparatus भितरे, it undergoes a lot of modification. What are the modification? It forms glycolipids and glycoproteins. माने प्रोटीन और लिपिड संगरे गोटे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप टे अटैच्ड हे जिवो. आउ सेटा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करिवो. एटी हम माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसीबो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कोन पय इंपोर्टेंट. व्हाट इज देयर रोल? तो ग्लाइकोप्रोटीन and glycolipids are important because the sugar group in them acts as a tag or a label. Kemti, for example, if Golgi apparatus adds mannose 6-phosphate label for proteins destined for lysosomes. Jodi gote protein re mannose 6-phosphate residue achi, tahale that means that protein will go to the lysosome. It would be directed to the lysosomes. So एमती glycoprotein and glycolipid गोटे address भेलिया काम करंती. sugar group टा गोटे address भेलिया काम करे. आउ सेटा particular cellular destination को target करिया रे help करे. तो गोटे protein टे first आसिकिरी modify हैला परे तापरे Golgi body कौन करिबो ना ताकू on the basis of the tags present, similar tags present हेले से ताको सॉर्ट कर दबो. माने को प्रोटीन टा लाइसोसोम को जिवो, कोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिवो, आ कोटा तमरा वैक्यूल को जिवो. एटा को से फर्स्ट सॉर्ट कर दबो on the basis of the presence of the sugar molecules or the tags. Then finally those will be packaged. Packaging रो माने कोन ना से माने गोटे membranous vesicle भितरे से प्रोटीन गोड़ा को पैक करी देबे. आउ फाइनली रिलीज हे जिवे. केमती रिलीज हे जिवो ना वेसिकल्स गोड़ा एटी देखि पारथबो डिस्टल पार्ट रे ट्रांस पार्ट रे गोटे आउटर मेम्ब्रेन रु बर्ड आउट हे जिवे. तो ये secretory vesicles will be further targeted into plasma membrane, lysosomes or vacuoles depending upon its glycosylation pattern. I hope it's clear now. So the function of Golgi apparatus is formation of glycoproteins and glycolipids. It's very important from exam point of view. And the Golgi apparatus performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. माने से proteins lipids से माने cell भितरे भी organelles को deliver ही परिबे किंबा outside of the cell भी deliver ही परिबे. एबे हमें next organelle that is lysosome विषय study करिबा.
Lysosomes are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. माने lysosomes माने Golgi apparatus रू ही formed हुअन्ति. How? By the process of packaging. I have already told packaging माने हैला कौन? Membrane भितरे तमरा proteins थिबे. Lysosomes रे जो protein दरकार से माने vesicles भितरे packed ही जिबे and they will have a specific tag. The tag is mannose-6 phosphate. The A tag हेले से lysosome को lysosome form करिवो. It has enzymes that are capable of breaking down different biopolymers. Typically, they are hydrolytic enzymes and are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids, and nucleic acids. The enzymes are optimally active at the acidic pH. यार pH टा 4.5 ରୁ 5 हेले ही enzymes माने active हेबे. What are the functions of lysosomes? Lysosomes typically break down the cellular waste. जहाँ भी हम cell भीतरे waste हबा hydrolytic enzymes माने ताकू metabolize करिबे and that takes place in lysosomes. Sometimes what happens, जो cell lysosomes present अच्छी से cell रही lysis cause करी पारिबो. That is called as self-lysis or autolysis. That's why lysosomes are also called as the suicidal bags of the cells. Now, lysosomes are typically found in eukaryotic animal cells. Plants lack lysosomes. The function of lysosomes is performed by vacuole. एबे structure टाको देखिबा. Lysosome is a spherical organelle. It is bound by a unit membrane. Unit membrane माने हैला कौन? A single membrane. एटा तर lipid layer और outside हैला protein layer. We all know the membrane is made up of lipid and protein. Inside space टाको हमें कहिबु lumen. ए lumen भितरे there is hydrolytic enzyme mixture. What are the enzymes present? Proteases that can digest proteins, lipases that can digest lipids, carbohydrases that can digest carbohydrate, nucleases which can digest nucleic acid, and phosphatases that can remove the phosphate group. एमती किछि about 50 enzymes are present inside the lysosomes. एबे ए enzymes रा activity पाई गोटे optimal pH दरकार which is about 4.5 to 5. केमिति ये pH टा maintain हुए lysosomes भितरे ना तार membrane रे गोटे transport protein थाए which utilizes ATP and uses that energy to actively push inside H plus ions of the protons. This proton pushing inside the lysosome lumen creates an acidic environment and the enzymes have an optimal pH to work. I hope you are clear about the structure and the function of lysosomes. So we will move to the last component, that is vacuole. Vacuole is often termed as the storehouse of the cell. आम घरे जहाँ भी अदरकारी जिनस थाए unwanted items, where do we put it? We put it inside the storehouse. The cell कौन करे ना जहाँ भी दरकार नहीं जिनस unnecessary things तो सेगुड़ा से vacuole भितरे put करे. So the vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm which contains water, sap, excretory products and other materials not useful for the cell. In amoeba, the contractile vacuole is present which is important for osmoregulation and excretion. And in protists, food vacuole is present which is formed by engulfing the food materials. आमे एबे डिटेल टिके देखिबा. एटा हला vacuolar structure. Vacuole is a membrane bound space. This membrane, it is called as tonoplast and it is a unit membrane or a
or a single membrane माने गोटे membrane अछि vacuole रा outside membrane टाको आमे tonoplast कहू आउ भितरे जो liquid अछि the fluid which is present inside the vacuole it is called as cell sap एबे कौन हुए ना ए सेल सैप भितरे डिफरेंट स्टोरेज मटेरियल थाए जहां भी सेल स्टोर करिया पई चाहे सच एज वाटर आयंस सुगर अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा एबे concentration inside the vacuole is more than the concentration of the cytoplasm तले according to diffusion the solutes गोड़ा inside के जिबा कथा नुह but how is the movement possible तो कौन हुए ना vacuole tonoplast जो membrane अछि तादरे गोटे transport protein थाए again they use energy or ATP आउ से माने कौन करंती ना solutes रो movement को against the concentration gradient करि पारंती so it's an energy driven process in which the solutes move inside the vacuole clear एबे आमे जदि plant cell और animal cells consider करिबा plant cell ले कौन हुए ना vacuole is very large they can occupy up to about 90% of the cell volume it's generally present in the center that's why the vacuole is central and it stores water apart from that it maintains a turgor pressure inside the plant cell this is a very important function एबे animal cell जदि देखिबा ताले animal cells भितरे कोन थाए ना multiple vacuoles present थाए and they are smaller in size they are not centrally present like the plant cell they are scattered throughout what is the function its function is storage and waste management आमे दीटा एग्जांपल देखिबा amoeba आमे जदि कंसीडर करिबा amoeba केस रे contractile vacuole थाए एबे कौन हुए ना amoeba ingestion परे तमरो absorption हे गला जहां भी waste material थाए से कौन हुए ना contractile vacuole भितरे पसी आसे तापरे कौन हुए when the process is over that contractile vacuole goes to the membrane surface a membrane surface रे जाए कि कौन हुए ना से outside contract करी जाए outside environment को the waste is released that's how the amoeba contractile vacuole helps in osmoregulation and excretion एबे जदि हमें protist देखिबा protist रे food vacuole हुए what is that food vacuole एबे ingestion करि सारला परे the food materials goes inside the vacuole and they are digested there so that is called as food vacuole they are typically seen in protists I hope vacuolar structure is clear एबे आमे summary को पढिले जिबा आमे चारटा organelles विषय डिटेल रे पढिले एबे आमे अंडरस्टैंड करि परिबा कि how their function is related or coordinated आमर फर्स्ट इन द लिस्ट थिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को अटैच हेकरी अछि तो सी सिंथेसाइज करछि कोन आरईआर सिंथेसाइज करछि प्रोटीन एसीआर सिंथेसाइज करछि लिपिड एबे आमर से प्रोटीन आ लिपिड सिंथेसाइज हेकी कोठी को जिवो ना से जिवो आमर गोल्गी apparatus को गोल्गी apparatus रे कोन हबो ना से प्रोटीन गोडा फर्स्ट मॉडिफाई हेबे modification what is the modification glycolipid form habo au glycoprotein form habo ebe se modified proteins mananकर गोटे typical tomar sugar molecule thiba that acts as a tag depending on the tag present golgi body kon karibo na taku sort karibo माने सेपरेट आउट कर दबो सब कोटा तमर जीव लाइसोसोम को कोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीव कोटा वैक्यूल को जीव से हिसाब रे से सॉर्ट करके करि परिबो दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन कोन ना पैकेजिंग एबे सॉर्ट हे गला तो एबे तमर फाइनल जो ट्रांस फेज अछि ट्रांस फेज रु से प्रोटीन्स गोडा गोटे वेसाइकल भितरे
प्रोटीन्स को मु शेड करछि देखो एटी पिंक रे प्रोटीन्स गोडा वेसाइकल भितरे पैक हे जिवे आउ बर्ड आउट कर जिवे ट्रांस फेज रो और मैच्योरिंग फेज रो राइट. That's why we now know why Golgi body is in close association with endoplasmic reticulum, because it has to get its lipids and proteins from ER. Now एबे देखिबा लाइसोसोम. लाइसोसोम काई अछि Golgi body पाखरे ना देखो लाइसोसोम भितरे आमे पढिलो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अछि राइट. से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कोडा केमिति लाइसोसोम्स को आसुची ना गोटे वेसाइकल रे आसुची राइट. तो वेसाइकल रे पैक हे कि आसुची. एबे तार टैग टा कोठी मॉडिफाई होची, टैग टा कोठी पुट करा होची मैनो 6 फॉस्फेट रो Golgi बॉडी रे. तो सेथि पई लाइसोसोम इज रिलेटेड टू Golgi बॉडी. The Golgi body is responsible for packing the hydrolytic enzyme with an appropriate tag so that it is delivered to the lysosomes. So now this lysosome, it performs a function of breaking down the cellular waste. जहाँ भी cellular waste break हैला, जो debris हैला, जो waste material कोठी store हवा, vacuole store हवा. तो एबे लाइसोसोम रो फंक्शन टा वैक्यूल संगे रिलेटेड हैला कि नहीं. लाइसोसोम वेस्ट रिलीज कला, वैक्यूल से जहाँ भी वेस्ट मटेरियल हैला सेटा को स्टोर कला. That's why we now can understand the 4 components are related to each other and work in a coordinated way, and that's why they are called together as an endomembrane system. I hope it's clear now. That's all for today. Thank you everyone, and if you like the video, consider to like it and subscribe it. Thank you. Have a good day.